Hello students, in this video we are going to do our next portion of chapter number 1, that it is called as a vegetative propagation. Vegetative propagation means that how do the plants are growing with the help of a asexual mode of reproduction. Vegetative propagation is a one type of a asexual mode of reproduction in which there are different types of modification. Types of modification is there like rhizome. Rhizome is basically a modified underground stem. Examples would be ginger here. Ginger, as all of you have seen at your home also. Now the next one is called as a runner or the stolon, that the slender stem that grows horizontally. That would be growing like this in the plants, and the examples would be strawberry here. Now the next one is offset, when the small virtually complete daughter plant, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका. So that would be same like कि एक छोटा सा डॉटर प्लांट भी जो है वो एक नए प्लांट को ग्रो कर सकता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑफस्पेट. एंड द एग्जांपल्स वुड बी हियर. इट इज अ वाटर हाइकिन. वाटर हाइकिन को आपकी बुक्स में जो है टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है, और इसको हम एक और स्पीशीज से नाम देते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज अ एलियन इन्वेजन स्पीशीज. Why it is called as a alien invasion species? क्योंकि जब इसको बाहर से इंडिया के बाहर से लाया गया था तो ये सोच कर लाया गया था कि that will give the beauty to our India. ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट के ये जहाँ पे भी ग्रो करता है वहाँ के जितने भी पूरा वाटर का सरफेस होता है उसको कवर कर लेता है, और जिसकी वजह से जो उसका इंटरनल है, जो पानी के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं, वो सब जो है उनको ऑक्सीजन सप्लाई पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट बंगाल. नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर. इट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबर. ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट हैज एनलार्ज्ड टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. मतलब जो अपना साइज जो है वो बड़ा कर लेता है, and these are shortened, thickened, and the underground stem is here, जो कि minute छोटे छोटे scales होते हैं इसके birds पे. And the next last portion for the vegetative propagation that you need to study is bulb. What do you mean by the bulb? That there would be a kind of, जैसे आप जो है घर में बल्ब लगाते हैं तो आगे से जो होता है वो swollen होता है और पीछे से थोड़ा सा minute होता है. So in the same way there would be a short stem with the leaf base. Very good example that you can see at your home only, that it is a onion and garlic. Now we have done with all these exceptions. Now we have done with all the vegetative propagation portion, and we have finished up with the asexual mode of reproduction also. Now the Yes students, here you can see that there are some of the example for the vegetative propagules. These all are the parts for the asexual mode of reproduction. Like for the runners, there is oxalis, sucker is main, tuber is potato, offset is water hyken, bulb is onion and garlic, and the rhizome is where the ginger, and the bulbous is agave, and the leaf buds is a bryophyllum. Here you can see that there are some of the pictures that are related to a asexual mode of nutrition. That reproduction, that would be a stem, for it is a tuber, it is for the potato, and the offset is for the cluster of leaves are there. Here it is the adventitious roots is an example for the sucker. Here it is a bryophyllum leaf is there. From the birds all the plants can be produced. And there it is an example for the runner, that would be a strawberry grass. There are all would be there. And after that there is a ginger. Ginger is also an example for the rhizome. With this diagram we have completed with the asexual mode of reproduction. Now the next one we are going to start with the sexual mode of reproduction, and in the sexual mode of reproduction we are having three types of events are taking place. One, it is called as a pre-fertilization, syngamy and fertilization, and then the post-fertilization. In the pre-fertilization event we are having a gametogenesis and the gamete transfer is there. Gametogenesis is basically the formation of a male gamete or the female gamete, and the gamete transfer is basically the transfer of a male gamete to the female gamete. Now these both we will do detail in the chapter number 2. Syngamy is the fusion of a male gamete and female gamete.
or fertilization is the same, and after the fertilization when the zygote would be formed, what would be the changes would be there, that condition is called as a post fertilization event. Now in the pre-fertilization event, as we have discussed, that it is a gametogenesis, where the process of formation of a haploid male gamete is taking place, and the homogametes and the heterogametes would be there. homogametes मतलब आपका मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो है वो एक जैसा दिखाई देते हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ हेट्रोगैमेट इज देयर, जहाँ पे कि मेल फीमेल गैमेट जो है वो अलग अलग, जैसे मेल स्पर्म इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल ओवम. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें कि हमने गैमेटोजेनेसिस की बात करी थी कि जब भी कोई पेरेंट बॉडी जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो न्यू गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस. After that gamete transfer, that it is a male or female gamete, both are under the process of a fertilization, and the male and female gamete undergo fuse to each other, that would lead to the formation of a zygote. Algae, bryophytes, pteridophytes, all are the examples for this. After that there is a pre-fertilization event में हमारे पास gamete transfer में pollination we have discussed earlier also, that pollination is basically a method of gamete transfer, means the pollen is going to be transferred into the ovum and the more zygote is there to form. So the number of a male gametes are 1000 times the number of a female gamete. There would be a loss of a male gamete during this transfer, and the dioecious animal is there, that would be a special mechanism for the gamete transfer. Dioecious animals means when the male and female are entirely different from each other and they are present at the one plant only. Now the syngamy and the fertilization हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले, that the male and female gamete fertilize together to form a zygote. Examples would be rotifers, honeybees, some lizards, birds, that would be producing the zygote without the process of a fertilization, और इस phenomenon को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis. After that the post fertilization event is there. In this event the zygote is formed and there would be some changes, जैसे कि जो ovule है, seed जो है वो ovule would be converting into the seed and the ovary would be converting into the fruit. So and then algae and the fungi, it would develop a kind of a thick wall that would be providing a nourishment to the plants, and then it would be undergone for the period of rest. After that the post fertilization event is there, जिसमें कि जैसे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स में होता है कि उसमें जो है वो मियोसिस के अंडर जाता है, एंड वाइल द ऑर्गेनिज्म दैट वुड बी शोइंग अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट वुड बी गोइंग फॉर द माइटोसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस में हमारे पास जो है वो सेल डिवाइड करेगा आइदर विद द हेल्प ऑफ अ माइटोसिस और मियोसिस. सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल की शेप इंक्रीज करेगी, सेल की जो है वो अपना साइज इंक्रीज करके एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा. Based on that, we are having a different types of animals. One, it is called as a oviparous animals, where the zygote development occurs female body के अंदर ही होता है. Example, very good example would be, there would be reptiles, birds, and the next one, and they are also called as egg laying animals. And the viviparous animals, जो कि zygote जो है वो body के अंदर ही develop हो रहा है, और जो female है that would be giving the birth to the young ones. Examples would be mammals. Now the next one is we have discussed earlier कि zygote जो है वो ovule से बनता है, and ovule would be converting into the seed and the ovary would be converting into the fruit. Now the germination of seed would be there, that would be led to the formation of a new plants. External and internal fertilization next topic है. इसके बाद external fertilization, जहाँ पे कि जो fertilization है वो outside the body रहता है, एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होगा. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो लार्ज प्रोड्यूस होते हैं. क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि मान लो किसी ने पानी में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन दैट मे बी सम ऑफ द एग्स वुड बी डिस्ट्रॉयड. तो टू increase the chances of a mating, the large number of gametes are produced in the external fertilization, and number of ova is very less as compared to the external fertilization in case of a internal fertilization, क्योंकि यहाँ पर डिग्रेडेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं.
टाइप्स ऑफ एनिमल्स अभी हमने साथ के साथ पढ़ ही लिया है. ओविपेरस जहाँ पे कि जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, गिव बर्थ टू द यंग वंस. यहाँ पर एग के ऊपर एक कैल्केरियस शेल होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, और हार्श एनवायरनमेंट में उसको रहना होता है, तो इसीलिए वो जो शेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. इसके ऊपर कोई शेल नहीं होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल है दैट इज गोइंग टू सर्वाइव इन साइड द मदर्स बॉडी ओनली. After that, there is some of the pictures related to oviparous animals like ostrich. Very largest egg होता है ostrich का. Hummingbird is there. Snakes भी egg release करते हैं. Fishes also releases. Chicken also releases egg, and the birds also releases the egg. So all these animals who releases the egg, it is called as a oviparous animal. Now the next one, it is called as a विविपेरस एनिमल दैट वुड बी देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ यंग वंस. तो वो आपका ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल होगा. इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश अप होता है यहीं पर. एंड होपिंग यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर दिस चैप्टर you need to overview with the video, the PPT that I had shared, and also the NCERT questions and the NCERT reading should be there. If any doubt, then we will discuss in the class. Thank you for today.